let's go on. Reading passage number 2. The title is I Contain Multitudes. Wendy Moore review Ed Young's book about microbes. So the whole passage is about microbes. And when they say I contain multitudes, it means microbes contain multitudes. Multitudes means a lot of information these microbes contain. Now, see, this sounds like an unusual topic. Microbes. How many of you know about microbes? Just few. See, others don't know. So if there is any passage, any topic like this, you can decide to do that at the end. Remember one thing, in actual IELTS exam, out of 3 passages, one is going to be quite confusing. And most of the time, that confusing passage can be second or third. So if you find such type of passage, it's a good idea to start from third passage, and then you can come back to second passage. There is no problem, right? Now what we are going to do, we are going to go on to the third passage, and we'll do that first. How to make wise decisions. So we do this one first, and then we'll go back to the other one. And you can do this as well. But once you start a passage, you should finish it. Not one part from here, second part from another passage, then from another passage. At the end, you'll be confused. Okay, it's not that you start one passage and you say, nahi, pichla hi sahi hai. I go back. Okay, never do like that. How to make wise decisions. Do you guys make wise decisions? No? All right. So anyways, how to make wise decisions. Please come to questions. Questions 27 to 30. The question type is multiple choice questions. In listening, we have multiple choice questions. But in listening, we have 3 options. In reading, when we get multiple choice questions, we have 4 options. Remember, whenever you deal with multiple choice questions, the first thing is you should know that the questions and answers are in order. Okay? And you should know this thing. Secondly, you just need to read the question of multiple choice question. Don't read options. If you read the question and the options, you are wasting your time and you are confusing your mind. Just read the question. From the question, you have to find clue word and then go to the passage, find the location of that clue word, and take multiple choice question as an independent question, and you're looking for the answer. Once you find the answer to that question, now sometimes question will be with a question mark, sometimes it is incomplete sentence. So you need to find the answer from the passage and then match that answer with one of the options. So if you read the passage carefully, if you reach the right place, read the right sentence, A, B, C, D, the right answer will click you. Let's see how to do it. Question number 27. What point does the writer make in the first paragraph? Now, whenever they say what point, it means what's the summary of the first paragraph. Okay? Please come to first paragraph. Are you there? Okay. Now, over here, for this, you need your skim reading skill. Skim reading means to read quickly so that you get to the gist of that. Let's see what point does the writer make. Across cultures, wisdom has been considered one of the most revered human qualities. Okay, understand? Although the truly wise may seem few and far between. Wisdom is important, but wise people are just few and far between. Empirical research examining wisdom suggests that, now this is important, main thing of the paragraph. Research examining wisdom suggests that it isn't an exceptional trait possessed by a small handful of bearded philosophers. Now they say wisdom is not something that only a small number of people have. But do they say by a small handful of bearded philosophers after all? In fact, the latest studies suggest that most of us have the ability to make wise decisions. So wisdom is not that only few people are wise. Most of us have this ability. This is what they say. Now let's go back, please. I'm reading all the options. Option A, wisdom appears to be unique to the human race. They did not mention only human race. Okay, so listen, elimination is the best way. Now, at the end of option A or in the beginning, you can cross it.
Option B, a basic assumption about wisdom may be wrong. Yes. And what is that basic assumption? That only a handful people are wise. And then he says wisdom is something that most of us can be wise. So the basic assumption, what is basic assumption? A handful people, philosophers who have beard only, they are wise. That is basic assumption. And then they say about wisdom may be wrong. Let's go on to option C. Still you have to read all four options. Concepts of wisdom may depend on the society we belong to. Not at all. Again, I tell you, sometimes, even if you don't find the right answer, eliminate the wrong choices. Whatever you are left with will be the right answer. Option D, there is still much to be discovered about the nature of wisdom. No. So, only B, basic assumption about wisdom may be wrong. And what is that basic assumption? Come back. They say wisdom has been considered one of the most revered human qualities. Basic assumption. And why it is wrong? Research examining wisdom suggests that it isn't an exceptional trait possessed by a small handful people and anybody can be wise. Okay, let's go on. Question number 28. What does Igor Grossman, what is the clue word? Igor Grossman. What does Igor Grossman suggest about the ability to make wise decisions? Now, what are you going to find? Igor Grossman and the ability to make wise decisions. What does he suggest? Second paragraph. Okay, let's read it. It appears that, now whenever they use the name, focus inverted commas as well. It appears that experiential, situational, and cultural factors are even more powerful in shaping wisdom than previously imagined, says Associate Professor Igor Grossman. What does he say? It appears that experiential, situational, and cultural factors are even more powerful in shaping wisdom than previously imagined. I mean, they are more powerful than people imagined in the past. Let's go back. Option A. It can vary greatly from one person to another. Not at all. Cross it. Option B. Earlier research into it was based on unreliable data. They mentioned earlier research, but they did not mention data. So, this is not the right answer. Option C. Importance of certain influences on it was underestimated. Yes, why right? Now let's go back. What are those certain influences? Come back. Those certain influences are experiential, situational, and cultural factors. And now give me the word for it was underestimated. What is the word for that? Exactly. They have used here factors even more powerful in shaping wisdom than previously imagined. So for than previously imagined, they use the word yes, underestimated. So C is the right answer. Please come to option D. Various branches of psychology define it according to their own criteria. Nah. One is no, one is not at all, one is nah. Okay? So the correct answer is C. Again, I'm telling you, eliminate wrong choices. And then you will come closer to the right answer. Question number 29, according to the third paragraph, now they have told us about the paragraph. According to the third paragraph, Grossman claims that the level of wisdom an individual shows, this is incomplete sentence. So level of wisdom an individual shows what? Let's go back. Third paragraph, Grossman claims. Found third paragraph? Okay. Now I'm going to read it from there. Let's come to second line. It is impossible to characterize. Okay, let's read from there. Everyone found it? Okay. It is impossible to characterize thought processes attributed to wisdom without considering the role of contextual factors, explained Grossman. Now please focus. In other words, wisdom is not solely an inner quality. Focus this. Wisdom is not solely an inner quality, but rather unfolds as a function of situations people happen to be in. He says wisdom is not inside quality. When we come into a situation, then we take wise decisions, right? So again, read this. In other words,
Wisdom is not solely an inner quality, but rather unfolds as a function of situations people happen to be in. Some situations are more likely to promote wisdom than others. Okay, now let's go back. According to third paragraph, Grossman claims that the level of wisdom an individual shows, option A, can be greater than they think it is. Not at all. Option B, will be different in different circumstances. Absolutely. For circumstances, they use the word situations. Come back, please. Everyone come back. What is the sentence? The sentence is, people happen to be. Some situations are more likely to promote wisdom than others. Some situations. And what is the word for situations? Circumstances. So will be different in different circumstances. Got it? This sentence will be different in different circumstances, and then match it with some situations are more likely to promote wisdom than others. Okay, so it is different there. 29 correct answer is B. Right? You're solving academic reading test. If you think it is difficult, yes, it is difficult. You have to take it as it is. I cannot sugarcoat it further. Let's go on. Question number 30. What is described in the fifth paragraph? When they say what is described, now you will go to fifth paragraph, skim read, and find the gist of that. What is described in the fifth paragraph? 1, 2, 3, 4, 5. Got it? Okay. Grossman and his colleagues. Now you have to read all and skim read. When you do skim reading, you're doing very fast. You're reading, okay? Like this. But don't make any noise. Don't whisper. Right? You're not allowed to do that in actual exam. Let's read this last paragraph. Grossman and his colleagues have also found that one of the most reliable ways to support wisdom is our own day-to-day decisions, is to look at scenarios from a third-party perspective. You know, sometimes third-party perspective, you look at yourself as a third person and then you decide something to do. Okay, like for example, agar Asad Yaqub ke saath aisa ho, to wo kya kare? I'm Asad Yaqub, but I'm taking myself as a third person, right? So let's see. Third person perspective, as though giving advice to a friend. Take yourself as you are a friend and you are giving advice to a friend. So this is called third party perspective. Let's see. Please come back. What is described in the fifth paragraph? Option A, difficulty encountered when attempting to reason wisely. No, they didn't mention any difficulty. Option B, example of the type of person who is likely to reason wisely. No. Yes. Look at the question as well. Huh? You only say no, 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 where it is yes. Oh, yes. Example of the type of person. Now, what is type of person? Friend. And it is third party scenario. So example of the type of person who is likely to reason wisely. When you think of yourself as a third person, just see Asad is your friend and Asad has this problem. What will Asad do to solve this problem? So that is example of the type of person who is likely to reason wisely. Option C, controversial view about the benefits of reasoning wisely. Controversial view, not mentioned. Option D, recommended strategy that can help people to reason wisely. There isn't any strategy like that. So example of the type of person who is likely to reason wisely. And who is that type of person? Friend. Absolutely. For question number 30, correct answer is B. Not friend. Answer is B. Okay? Yes. So it's kind of a strategy, Yeah. Okay, guys. Now we have questions 31 to 35. Complete the summary using list of words. Again, book 16, test number 2, questions 31 to 35. Complete the summary using the list of words. We have two types of summary completion. Type 1, there is a summary. You have to select the word from the passage and write it there. Type 2, there is a summary. You have to find a word in the passage, then find the synonym of that word from a box of words, and then you got to write. It's double the trouble. Okay, so we've got this double the trouble, but don't worry, I'll tell you how to do it. The good news is questions and answers are in order. So that is the good news. Okay, let's see. Characteristics of wise reasoning. Now we'll find the part of the passage. Let's read some more. Igor Grossman and colleagues have established 4 characteristics which enables us to make wise decisions.
Now let's just go back, characteristics of wise reasoning. Please go back. See where you find characteristics. 4. The word 4 is important. 4 characteristics. Which paragraph? 4th paragraph. This is called scanning. Through scanning, you will reach the right part of the passage where there is the answer. Now, paragraph number 4 contains the answer, right? Just mark it, and now we come back to the question. Please come back to the question. Now we are peaceful because we know where the answer is. If you read all the question, you waste your energy to read the question. By the time you scan and read the part of the passage, you will forget the question. So first, don't read the question. Scan the question. Find the clue word. Scan the clue word in the passage. Mark it there. Then read the question. Okay, let's read. Igor Grossman and colleagues have established 4 characteristics which enable us to make wise decisions. It is important to have a certain degree of dash. Underline the word certain degree of. And there will be a synonym of certain degree of, and there whatever the word after that is, we'll just find that. Please come back. I'm reading 4th paragraph. Coming up with a definition of wisdom is challenging, but Grossman and his colleagues have identified 4 key characteristics as part of a framework of wise reasoning, right? As part of the framework. Now let's go on. One is intellectual humility, or recognition of the limits of our knowledge. And another is appreciation of perspective wider than the issue at hand. Right? So just read from here again. And his colleagues have identified 4 key characteristics as part of a framework of wise reasoning. One is intellectual humility. Now listen, please come back to the question. This is certain degree of dash. Let's read on. Regarding the extent of our knowledge, then and to take into account something. This is second one. So certain degree of regarding the extent of our knowledge. Please come back. One is intellectual. What is intellectual? No, intellectual means, please come back. Intellectual means regarding the extent of our knowledge. Intellectual means extent of our knowledge. What is the word they have used for that? Humility. Okay, humility means you know a lot and you're very humble. I don't know anything about IELTS. It's just a test, I think, yeah. What do we call it? Humility, right? Humility regarding the extent of our knowledge. For knowledge, they use the word intellect, right? Now, please find a word for humility. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A word for humility. Humility and modesty. They are synonyms. So the answer is modesty? No. Answer is D. If you write modesty by mistake, that will be wrong. Do you understand? I mean, just check here. Extent of our knowledge. For extent of our knowledge, they use the word intellectual humility. So humility means modesty regarding the extent of our knowledge. Let's go on. And means another one. To take into account dash, which may not be the same as our own. To take into account something which may not be the same as our own. Please come back. I'm reading on after humility. Or recognition of the limits of our knowledge. This is done. And another is appreciation of perspectives wider than the issue at hand. Perspectives wider than the issue at hand. So, take into account perspectives. They use the word, and another is appreciation of perspectives. Appreciation of perspectives means take into account perspectives. What is the word for perspectives? Opinions. Option A. Now the answer is A. You are doing IELTS, yeah? Why not C? C is not that. C is view. Listen. Perspectives is a plural word. Try to understand that point. Just go back and see perspectives. That's the plural word, and for that, the word that we have, option A, opinions, that is plural. Got it? Exactly. I mean, if it could be viewpoint can be something like opinion, but it's only view. All right, let's go on.
We should also be able, found it? Question number 33, I'm reading. We should also be able to take a broad dash of any situation. The word broad is important. Broad dash of any situation. Same paragraph. For broad, they use the word wider. Let's go on. Perspectives, wider than the issue at hand. So, wider dash of the situation. Again, they use the word perspective. Now you are right. Another word for perspective. That is view. Exactly. Wider than the issue at hand. What is wider? Perspective, wider than the issue. So, the question says we should also be able to take a broad view. For perspective, wider. For wider, they have used the word broad. And for perspective, this time we are going to use view of any situation. Okay, now, can you see we have a separate paragraph? So for question number 33, answer is C. And answer is C. Answer is not view. On your answer sheet, you will not write view. By the way, the options which you have selected already, cross them. Now we have used option D. Please cross it. We have also used option A, cross it. And finally, we used option C, cross it as well, because you will not use it again. So if you cross the options, then you will be left with minimum words. It will save your time and it will help you find the right one. Now we have a separate summary. Grossman also believes that it is better to regard scenarios with dash and then there is full stop. Can you see that? Grossman also believes that it is better to regard scenarios with something. Please come back. Very next paragraph. Grossman and his colleagues have also found that one of the most reliable ways to support wisdom in our own day-to-day decision is to look at scenarios. Now be careful. To look at scenarios from a third-party perspective, as though giving advice to a friend. Please come back. Third-party perspective. Okay, Grossman also believes that it is better to regard scenarios with third-person perspective. Option? All right. H is experiences. No. To regard scenarios with option F, objectivity. Objectivity means you select an object like a friend. Friend is an object. So this is objectivity. Okay? Sure, the word objectivity, they've used friend as an object. You know, subject and object. I am a subject. If I think about myself when I'm making a decision, this is subject. But if I think about myself as a third person, that is an object. So that is what we call objectivity, third person scenario. Okay, let's just, underline the points and go back, read them again, try them again, you'll find them. Question number 35. By avoiding the first person perspective, we focus more on dash. Now, when we avoid first person means I, and third person means friend's point of view, third person, okay? So he says, by avoiding the first person perspective, we focus more on. It means when we do this third person thing, we focus more on what? Come back. Same paragraph. Yes, I'm reading it from third line. Last paragraph, title page, third line. Research suggests, found it? Now please be careful. Research suggests that when adopting a first person viewpoint, we focus on the focal features of the environment. And when we adopt a third person, now be careful, answer is here. When we adopt a third-person observer viewpoint, we reason more broadly and focus more on interpersonal and more ideals such as justice and impartiality. Find a word for justice and impartiality. Absolutely. Justice and impartiality. For that, the word is fairness. So 35G is the right answer. Yeah? Actually, now your brain has stopped functioning. Sometimes this happens. This happens with me as well. Shmaila, mera naam kya hai? Asad Yaqub. Thank you. See that? Yeah? I don't know my name, huh? So this thing happens with everybody. Don't worry. This is very simple. Do it again after some time. You'll be fine with it, okay?
Okay. All right, let's go on. Questions 36 to 40. And now we have true, false, not given, not. Punjabi, not given. True, false, not given. Very simple. 36, true. 37, false. You know why false? Because 36 is true. And 38, not given, because 36 and 37 are true, false. And 39, again true, otherwise true will be angry. Right? And 40? No, not given. Yeah. All right. You can play like that as well. Now, true, false, not given. When they appear in part 1, sentences are simple, easy to understand. When they appear in part 3, ideas are more complex. But still, methodology, things are same. Okay? So let's do. Question number 36. Students participated. Question number 36. Students participated in the job prospects experiment. Job prospects experiment. Now let's go back. Just see students and job prospects experiment. Students, job prospects experiment. Second page, second paragraph. This is called scanning. Right? Through scanning, you reach the right part of the passage which contains the answer. Okay, we have students and we have all that. So we know the second paragraph is going to have the answer. Now please come back. Now we read the question carefully. Students participating in job prospects experiment could choose one of two perspectives to take. Now listen. Students could choose one of two perspectives to take. Now if they could choose one of two, answer is true. If they could choose both, answer is false. If they could choose none, or if they had no choice, again it's going to be false. And if they don't tell us whether they could choose one or more, or they had no choice, then it is not given. So just focus, could choose one of two perspectives to take. Let's go back. I'm reading it. For example, in one experiment that took place, are you there? Yes. All right. In one experiment that took place during the peak of recent economic recession, graduating college seniors were asked to reflect on their job prospects. The students were instructed to imagine their career either as if you were a distant observer or before your own eyes. Now one option, either. When they use either or, how many options? Two options. Either or means two options. So be careful. Either as if you were a distant observer or before your own eyes as if you were right there. So how many options? Two. Either this or that. Yeah, you need more tea. आप ना चाय की एक ड्रिप बनवा के लाया करें. यहाँ पे लगा ली. Okay, chalti rahi saath saath. Please come back. Come on. Let's read this again. They said either as if you were a distant observer. That is option number 1. Yeah, अब आपको भी समझ आ रही है ना? Good. That's great. That's great. You've come back from there. And before your own eyes as if you were right there. So two options, you were observer or you were right there. Now please come back. Students participating in job prospect experiment could choose one of two perspectives. No, they could choose both actually. So the answer is false. Hello? Sir? Correct? Yeah? See, here they say one of two. And in the passage they say either this or that. Right? It's the same thing, like either you can marry your aunt's daughter or uncle's daughter. Right? So uncle or aunt. Are you married? No. So? Neither. Yeah, exactly. Yeah. Cousin marriage. I'm against cousin marriage. They give you the feeling like a sister. Okay. Cousins are more like sisters. Okay. So, all right. Okay. Question number 36. Answer is false. Exactly. जितना मुश्किल टेस्ट होगा उतनी इनकी चाय ज़्यादा बिकेगी. Okay? Have you noticed now? पूरी डिश भर के लाया है. जितना मुश्किल टेस्ट होगा उतनी चाय बिकेगी. हाँ? Let's select some more difficult tests for you. Good for us. Question number 37. Participants
In the couples experiment, couples, yeah, now he's smiling. So those who are couples, they never smile. Those who are not couples, they smile. Yeah, exactly. Participants in the couples experiment were aware. Now listen, participants in the couples experiment, couples were aware, means they knew. वो जानते थे. Couples were aware what? That they were taking part in a study about wise reasoning. Now, if couples were aware that some research is going on, answer is true. If couples didn't know that they were the subject of some research, answer is false. And if they don't tell us whether couples were aware or not, then the answer is not given. Let's go back. The clue word is couple. Now look for some couples, here or outside. Okay. So let's see. In another study, couples in long-term romantic relationships were instructed to visualize an unresolved relationship conflict either through the eyes of an outsider or from their own perspective. Read carefully. Just what do you have to find? Whether the couples were aware that some research was going on or all that. Okay. Participants then discussed the incident with their partner for 10 minutes, after which they wrote down their thoughts about it. Couples in the other's eye condition were significantly more likely to rely on wise reasoning, recognizing other perspectives and searching for a compromise compared to the couples in the egocentric condition. Have they mentioned anything that couples were aware or they were not aware? They didn't mention. Answer is not given. 37, not given. Question number 38. In the couples experiment, again they have couples, huh? In the couples experiment, do you want to participate in couples experiment? All right, you have to bring your own couple for that, okay? Don't assume that they will provide you a couple, yeah? All right. Okay, in the couples experiment, the length of the couple's relationship had an impact on the results. Now go back. Length of couple's relationship, same paragraph. Length had effect on their results. Length of couple's relationship, 10 years relation, 20 years relation, and all that. Third paragraph. It's the same paragraph. Participants then discussed the incident, right? Couple's eyes conditions were significantly more likely. Did they mention the length of relationship? No. Another not given. Two not givens consecutively can make you make you irritated or make you confused. That how come two are not given? There was a test I was solving. The first 3 questions were not given. Okay, this is also possible. Now, it doesn't mean you write first 3 not given. Sir ne kaha tha. Not like this, okay? Sure, listen. Just focus this thing. Question number 38. The focal point is couples' relationship had an impact on the results. Length of couples' relationship. Like their relationship continued for 5 years, 10 years, 20 years. So the length of relationship impact on the results. They did not mention anything about the couple, length of their relationship on the results. Okay, let's do question number 39. After 2 not given, 39 should be? False. Very good. You never guess. Okay, yeah. In both experiments. Now, what are both experiments? Please come back. Yeah, students one and the couple ones. Now you have to look at 2 paragraphs. The students experiment, and what was that? From your own point of view or from a third person point of view, right? And the couples one. So, let's see. In both experiments, the participants who looked at the situation from a more detached viewpoint tended to make wiser decisions. And that's what they told us already, third person's view. So, what is that? What are they using for third person view in both experiments? The participants who looked at the situation from a more detached viewpoint. More detached viewpoint means third person's view, tended to make wiser decisions. Please come back. Okay, now we got to see in both they made wiser decisions.
come to fourth last paragraph. Participants in the group assigned to the distant observer. Distant observer means detached from the situation. Found it? Yes. Fourth last paragraph, third last line. Participants in the group assigned to the distant observer role displayed more wisdom. Got it? So the first thing we found here, they displayed more wisdom. Now, by the way, answer can be false if in one experiment, detached thing showed more wisdom. In the second experiment, it showed less wisdom. Answer can be false, right? Now, let's go on to the other one. I'm reading this third last paragraph from fourth line. Couples in the other's eyes condition. Other's eyes means detached ones. Third person view. Couples in the other's eyes condition were significantly more likely to rely on wise reasoning, recognizing others' perspectives, and searching for a compromise compared to the couples in the egocentric condition. Right? So the answer is true. Absolutely. See that we had to read two parts of the passage for one question. Now, when they say both experiments, if it is one experiment and other is not that, then it is false. Last question, Grossman. Theory, acidi, tesi. You know, sometimes you see the characters and you start shouting against them and all that. Grossman believes that a person's wisdom is determined by their intelligence to only a very limited extent. Right? Wisdom has little connection with intelligence. Even if you're not intelligent, you can take wise decision, right? So let's go back. It's the last paragraph. Okay, last paragraph, third last line. That is, knowing how wisely a person behaves in a given situation is more informative for understanding their emotions. Okay, let's start it from the beginning. We might associate wisdom with intelligence. Answer is here. Okay, we might associate wisdom with intelligence or particular personality traits, but means wisdom has nothing to do with intelligence. When they say but, research shows only a small positive relationship between wise thinking and crystallized intelligence. So, what is the question? Grossman believes that a person's wisdom is determined by their intelligence to only a very little extent, and limited extent. What is the word for that? Research shows only a small positive relationship between wise thinking and crystallized intelligence. Answer is true. Okay, let's start. Title क्या है? Future of work. Come the mustaqbil. Future of work. कोई नहीं है. All right. कोई future नहीं है हमारे work का. So future of work और देखते हैं ये क्या है और कहाँ से है. आए हाय 27 से 30 आ गया जी. मल्टीपल चॉइस. अच्छा, अब देखते हैं हमने शुरू कहाँ से करना है. उसके बाद 31 से 34 आ गया समरी कंप्लीशन. और नीचे जो एक डब्बा दिया हुआ है ना, ये डब्बा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए काफी है. ठीक है, मतलब क्या है, वर्ड ढूंढना है पैसेज से, उसका सिनोनिम ढूंढना है इस डब्बे से, और फिर उसको आपने वहां पे उस अल्फाबेट को लगाना है. ठीक है, और लास्ट क्वेश्चंस हैं लिस्ट ऑफ पीपल. इसको हम कहते हैं मैचिंग, कि आपने लिस्ट ऑफ पीपल को मैच करना है उनकी स्टेटमेंट्स के साथ. तो सुन लें, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में होते हैं. मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में होंगे. उसके बाद ये जो आपका आ गया समरी कंप्लीशन, इसमें भी ऑर्डर में होंगे. और फिर एंड पे जो लिस्ट ऑफ पीपल है, यहां पे क्वेश्चंस और पैसेज ऑर्डर में नहीं है, लेकिन लिस्ट ऑफ पीपल ऑर्डर में है. ठीक हो गया. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तरतीब से ही स्टार्ट करते हैं. एग्जैक्टली. आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 27 पे. द फर्स्ट पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट. ये देखें कितने दयालु हो गए, इन्होंने हमें बता दिया है कि पहला पैराग्राफ हमें क्या बताता है. राइट, द फर्स्ट पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट. अच्छा, अब सुन लें, मल्टीपल चॉइस में आपने ऑप्शंस को पहले नहीं पढ़ना. इसको करें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वाले तरीके से. मतलब पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ के पैसेज में जाएं, वो इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करें, फिर उस इंफॉर्मेशन को A, B, C, D के साथ मैच करें.
कैसे करने हैं अभी करके बताता हूं. फर्स्ट पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट, सब लोग आ जाएं पहले पैराग्राफ पे. अकॉर्डिंग टू लीडिंग बिजनेस कंसल्टेंसी 3 to 14% of the global workforce will need to switch to a different occupation. अभी हमें क्या बता रहे हैं कि 3 to 14 जो वर्क फोर्स है, जो लोग काम करने वाले हैं, उनको डिफरेंट ऑक्यूपेशन पे जाना पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स. अगले 10 से 15 सालों में बैंक्स नहीं होंगे कि जितने लोग बैंक में जॉब करते हैं सब वेले. एप्लीकेशंस आ गई ना आपकी, ठीक है. तो वो बता रहा है कि अगले 10-15 सालों में कितने 3 से 14% लोगों को अपनी जॉब चेंज करना पड़ेगी. एंड ऑल वर्कर्स विल नीड टू अडेप्ट एज देयर ऑक्यूपेशंस इवॉल्व अलोंगसाइड. उनको चेंज करना पड़ेगा, मतलब उनको अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो फील्ड है वो बड़ी तब्दील हो जाएगी, राइट. अब जैसे आपने देखा अभी ऑनलाइन भी डॉक्टर्स आ गए. आप टेलीफोनिक कॉल करें, उनको बताएं मेरा ये प्रॉब्लम, आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे. तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसके साथ ये सब अडॉप्ट करना. ये पहला पैराग्राफ बता रहे हैं, ठीक है. आगे क्या कह रहा है? ऑटोमेशन और एम्बॉडीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऑटोमेशन का मतलब है खुद ही जो काम हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रोबोट्स और ड्राइवरलेस कार्स एंड ऑल दैट. अब पहला पैराग्राफ हमें ये चीज़ें बता रहा है. अब आइएगा ऑप्शन ए बी सी डी पे. अच्छा, पता है क्या करना है? ऑप्शन को पढ़ना है ना, उसके बाद अगर तो वो ऑप्शन आंसर नहीं है तो ऐसे सारे हिलाना है. अगर वो आंसर है तो ऐसे, और अगर नहीं समझ आता आंख ऐसे करके क्वेश्चन मार्क ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें. ओके, ऑप्शन ए, काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट विल बी मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ एआई. कुछ लोग तो यहीं पे ढेर हो जाएंगे. हाँ, यही कह रहे हैं. नो, क्रॉस कर दें इसको. क्रॉस जब मैं कहूँ ना, पूरी को लाइन नहीं मारनी, एंड पे छोटा सा क्रॉस लगाना है, और जो ना उसको ये. ऑप्शन बी, extent to which AI will alter का मतलब है adapt the nature of the work that people do. लग रहा है ना? चलें इसको हम टिक कर लेते हैं, लेकिन आगे चलते हैं. ऑप्शन सारे पढ़ने हैं. C, proportion of the world's labor force who will have jobs in AI in the future. कुछ ऑप्शंस पता है कैसे होंगे? आपके अंदर से आवाज आएगी बकवास, ठीक है, बिल्कुल ही बकवास ना, उसको कोई क्रॉस मार दें. अच्छा, अब आ जाएं डी पे. Difference between ways that embodied and disembodied AI will impact on workers. ये भी वही है, ठीक, इसको भी क्रॉस कर दें. अब हम रह गए ऑप्शन बी पे. Extent to which AI का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will alter का मतलब है चेंज the nature of the work that people do. यही उन्होंने कहा है, वापिस आए. All workers will need to adapt as their occupations evolve alongside. कि सारे वर्कर्स को तब्दील करना पड़ेगा अपना वर्किंग स्टाइल एंड ऑल दैट. तो आंसर क्या हो जाएगा 27 का? बी. वेल डन. अभी आप सेक्शन 3 कर रहे हैं, अब दिमाग की घंटियां बजेंगी और ऑल दैट. या अभी देखिएगा ऐसा सख्ता तारी होगा ना क्लास में, आवाज़ ही नहीं, बाहर की आवाज़ें आएंगी. फिर 28 पे आ जाए. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ, व्हाट इज स्टिला पेकिडी. स्टिला नाम आ गया, ठीक है, कि सेकेंड पैराग्राफ उन्होंने लोकेट कर दिया. पहले देखें तो सही क्या देखना है. अकॉर्डिंग टू सेकेंड पैराग्राफ, व्हाट इज स्टिला पेकिडीज व्यू ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी. नॉलेज इकोनॉमी का वर्ड है, तो स्टेला जो है वो नॉलेज इकोनॉमी के बारे में क्या कहती हैं? थैंक यू. स्टेला नॉलेज इकोनॉमी के बारे में क्या कहती हैं सेकेंड पैराग्राफ में. और देख रहे हैं नॉलेज इकोनॉमी का वर्ड इन्वर्टेड कॉमास में है. इसका मतलब है कि ये एक टर्मिनोलॉजी है. नॉलेज इकोनॉमी क्या है? टर्मिनोलॉजी है. स्टेला बाजी जो हैं वो इसके बारे में क्या कहती हैं, ये हमने देखना है. और कौन सा पैराग्राफ है? सेकेंड. आ जाए सेकेंड पैराग्राफ पे. स्टेला मिल गया. Dr. Stella Piketty from Cambridge Judge Business School believes that some of the most fundamental changes are happening as a result of the algorithmication of jobs that are dependent on data rather than on production. और इस चीज को आगे देखें, जो हाइफन है ना, डैश, इसका मतलब है, इसके लिए जो टर्म यूज की जा रही है वो है द सो कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी. इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ें. वो क्या कह रही है? बिलीव्स दैट से आगे पढ़िएगा दोबारा. सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चेंजेस आर हैपनिंग, जो बुनियादी तब्दीलियां हो रही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द एल्गोरिथमिकेशन. अब एल्गोरिथमिकेशन क्या है? आपका जैसे यूट्यूब है, फेसबुक पे आप कोई एक चीज सर्च करें ना, फेसबुक आपको वही दिखाएगा. यूट्यूब पे आप एक वीडियो देख लें खुद सर्च करके, वैसे ही हजारों आपको दिखाएंगे.
बाद में फिर कोई और आपका मोबाइल जाएगा तू यहो जी वीडियोस देखना है यूट्यूब पे, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इसको कहते हैं एल्गोरिथमिकेशन, राइट। तो एल्गोरिथमिकेशन का रिजल्ट है, वो क्या बता रहे हैं कि मोस्ट fundamental changes are happening as a result of algorithmication of jobs that are dependent on data. यानी जॉब्स जो डेटा पे डिपेंडेंट है, डेटा एनालिस्ट हो गया एंड ऑल दैट, तो वो उसमें ये हो रहा है रादर देन ऑन प्रोडक्शन, बजाय प्रोडक्शन के, राइट। सो दिस इज व्हाट दे कॉल नॉलेज इकोनॉमी। अब जरा आइएगा ABCD। अच्छा, अब नॉलेज इकोनॉमी का की वर्ड है ऑप्शन ए, इट इज हैविंग। इट का मतलब है नॉलेज इकोनॉमी। Knowledge economy is having an influence on the number of jobs available. No, ये तो उसने नहीं कहा ना कि नॉलेज इकोनॉमी से जितनी जॉब्स मिलेंगी उसका नंबर, इसको क्रॉस कर दें। ऑप्शन बी, नॉलेज इकोनॉमी इज चेंजिंग पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर ऑक्यूपेशन। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। लें जी, अब चांस हो गया 50-50, पहले था 25-25, राइट। अब आए सी पे, नॉलेज इकोनॉमी इज द मेन रीजन वाई द प्रोडक्शन सेक्टर इज डिक्लाइनिंग। No, they did not mention production. प्रोडक्शन की बात हुई है लेकिन प्रोडक्शन सेक्टर डिक्लाइनिंग की बात नहीं हुई। अब आंखें बंद करके डी आंसर है, ना भी पढ़ें तो। एग्जैक्टली क्या है? नॉलेज इकोनॉमी इज अ की फैक्टर ड्राइविंग करंट डेवलपमेंट्स इन द वर्क प्लेस। ठीक हो गया? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 29 पे आइएगा। What did Pekidi observe at the telecommunication company? अब हमारा कीवर्ड क्या हो गया? टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पे पेकीडी ने क्या ऑब्जर्व किया? ओके, आप आ जाए थर्ड लास्ट पैराग्राफ पे। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी मिल गया? ओके, इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट से पढ़ते हैं। Another issue is the extent to which the technology influences or even controls the workforce, कि टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स को कंट्रोल कर रही है। For over 2 years, Pekidi monitored का मतलब है observed, a telecommunication company, the way telecom sales people work in through personal and frequent contact with clients. अब टेलीकॉम पीपल क्या करते हैं? कॉल करके नहीं, आपको कोई गाड़ी बेचनी है, गाड़ी किस्तों पे ले लें, ये कर लें, वो कर लें, तो वो क्या बोल रहे हैं? The way telecom sales people work is through personal and frequent contact with clients using the benefit of experience to assess a situation. Benefit of experience, किसी सिचुएशन को असेस करने के लिए, and reach a decision, यानी सिचुएशन देखते हैं, उसको असेस करते हैं और फिर डिसीजन पे पहुंचते हैं। हाउएवर द कंपनी का मतलब है टेलीकॉम कंपनी, हैड स्टार्टेड यूजिंग एल्गोरिदम। अब इस कंपनी ने भी बजाय इसके कि इंसान कॉल करके इंफॉर्मेशन लें एंड ऑल दैट, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब है स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा आपको टेक्नोलॉजी दे रही है उसकी मदद से। दैट डिफाइंड व्हेन अकाउंट्स मैनेजर शुड कॉन्टेक्ट सर्टन कस्टमर। अब आपको डेटा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगी कि आपने कब कस्टमर से कॉन्टेक्ट करना है। अबाउट विच काइंड ऑफ कैंपेन एंड व्हाट टू ऑफर, बजाय इसके कि इंसान खुद से फैसला करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बताएगी कस्टमर को कब रब्ता करना है एंड ऑल दैट। अब आइएगा वापस ऑप्शन ए 29 का, स्टाफ डिसअग्रीइंग विद द रिकमेंडेशंस ऑफ AI। नो, डिसअग्रीइंग की बात नहीं हुई, इंफॉर्मेशन AI की बात हुई है, इसको तो काट दें। बी पे आ जाए, स्टाफ फीलिंग रिजेंटफुल, कि स्टाफ नाराज हो रहा है। रिजेंटफुल कहते हैं नाराज होना, कोई ऐसी बात हुई नहीं, 50-50 हो गया। ऑप्शन सी, स्टाफ मेकिंग श्योर दैट AI प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स दैट दे वांट। एब्सोल्युटली, स्टाफ इज जस्ट मेकिंग श्योर दैट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज गिविंग देम द रिजल्ट्स दे वांट। अब जरा डी पे आ जाएं, जरा इसकी भी तसल्ली कर लेते हैं। स्टाफ अलाउइंग AI टू कैरी आउट टास्क दे ought to do themselves. No, staff is not allowing AI. I mean, इस चीज पे फोकस करें। Staff allowing AI. Staff is not allowing artificial intelligence. Actually, artificial intelligence is doing it for them. So there is no permission or anything like that. So therefore C is the right answer. हम सेक्शन 3 कर रहे हैं, मुस्कुराते रहें साथ साथ। वो देखिए गाड़ी आ रही है उधर से। ट्रेन को पंजाबी में क्या कहते हैं? लैन गड्डी। ये
यासीन इसी को हॉर्न ना बजाया करे यहां पे आके. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 30. वो यासीन ने फोन किया इंजन ड्राइवर को. वो करीम है ना इंजन ड्राइवर इसका, और उसे कहा बंद करे इसको. 30 पे आ जाएं जी. क्वेश्चन नंबर 30. इन हिज रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च का मतलब उसने एक आर्टिकल छापा है. इन हिज रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च इवन मेगॉगे. अब इवन मेगॉगे हमारा क्लू वर्ड है. उसकी जो रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च है उसके बारे में. लेट्स गो बैक. इवन मेगॉगे का वर्ड देखें, सेकेंड पेज पे, थर्ड, फोर्थ लास्ट पे मिल गया. एग्जैक्टली. ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारा? इन इज रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च एवन मेगॉगे. अब एवन मेगॉगे पहले ढूंढें, उसके बाद उसकी जो रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च है उसको देखें. उसकी जो रिसेंटली पब्लिक रिसर्च है वो अगले पैराग्राफ में है. मिल गया. अब यहां से पढ़ते हैं. हिज रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च, कि उसकी जो रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च है, आंसर्स द क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन को आंसर करती है. वो क्या है? ऑफ वेदर ऑटोमेशन. ऑटोमेशन का क्या मतलब है? चीजों को ऑटोमेटिक कर देना. अब आप बैंक में पैसे जो हैं वो बगैर किसी बंदे के भी जमा करवा सकते हैं मशीन से. दैट इज ऑटोमेशन. AI एंड रोबोटिक्स विल मीन अ जॉबलेस फ्यूचर. क्या कह रहे हैं? AI और रोबोटिक्स का मतलब है जॉबलेस फ्यूचर, नौकरियां रहेंगी नहीं. राइट, दैट्स व्हाट ही सेज. लेट्स गो ऑन. बाय लुकिंग एट द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हिस्ट्री इज क्लियर दैट चेंज कैन मीन रिडंडेंसीज, लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल देना. बट सोशल पॉलिसीज कैन टैकल दिस, कि इस चीज को टैकल कौन करेगा? सोशल पॉलिसीज. सोशल पॉलिसीज कैन टैकल दिस थ्रू रिटेनिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट. रिटेनिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट का मतलब है कि बंदे को अगर कंप्यूटर आ गया यहां पे, इसको दूसरी नौकरी पे लगाते हैं. नाउ लेट्स गो बैक. ऑप्शन ए challenges the idea that redundancy is a negative thing. redundancy का वर्ड आया है लेकिन ये नहीं आया कि redundancy is a negative thing, तो ये आंसर नहीं होगा. बी पे आ जाए. shows the profound effect of mass unemployment on society. No, they did not show profound effect of unemployment on society. unemployment की बात हुई है लेकिन unemployment का society पे क्या इफेक्ट है उसकी कोई बात नहीं हुई. वर्ड से धोखा नहीं खाना, इसको भी काट दें. सी पे आ जाएं. highlights some differences between past and future job losses. No. अब जरा देखिएगा क्यों. पास्ट एंड फ्यूचर जॉब लॉसेस, वापस जाइएगा. फ्यूचर और पास्ट की क्या बात हुई है? रोबोटिक्स विल मीन अ जॉबलेस फ्यूचर बाय लुकिंग एट द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हिस्ट्री इज क्लियर दैट चेंज कैन मीन. अब पास्ट की कोई बात हुई है? नो. सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. अब पीछे क्या रह गया? illustrates how changes in the job market can be successfully handled. अब successfully handled की जगह पे जो उसने बताया ना, social policies and all that, yeah, it's actually that. So D is the right answer. अब हम एडवांस लेवल की रीडिंग कर रहे हैं. ये उन लोगों के लिए जिन्होंने 7, 8, 9 बैंड तक जाना है. राइट? Yeah. Okay guys, now let's go on. एल्गोरिथमिकेशन ऑफ जॉब्स, उसी की बात करें. कैसा ड्राई सा टॉपिक है ना, एल्गोरिथमिकेशन ऑफ जॉब्स. ओके, स्टेला गुस्सा आ रहा है ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होगा गुस्सा. फिर आप इन बंदों पे, इनके नामों पे एंड ऑल दैट. नहीं, जैसे बचपन में 9th 10th में पढ़ते थे, न्यूटन के सर पे सेब ना ही गिरता तो अच्छा था, हमें मुसीबत डाल के चला गया. ओके, ये Stella Pekidi of Cambridge Judge Business School has been focusing on the algorithmication of job. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब जरा सुनिएगा है क्या, चक्कर क्या है. Algorithmication of jobs which rely not on production. उसने क्या बताया था? जॉब्स प्रोडक्शन पे नहीं रिलाई कर रही, किस पे कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. ठीक है, अब जरा वापिस आइएगा. पैराग्राफ नंबर 2. पैराग्राफ नंबर 2 सेकेंड लाइन के एंड पे आ जाएं. ऑफ जॉब्स दैट आर डिपेंडेंट. डिपेंडेंट का क्या मतलब है? रिलाई.
डिपेंडेंट ऑन डेटा, जॉब्स आर डिपेंडेंट ऑन डेटा। अब डेटा का सिनोनिम मुझे बता दें, ए बी सी डी में ढूंढें डेटा का इंफॉर्मेशन, क्या वर्ड आएगा इसकी जगह? इंफॉर्मेशन। मिल गया? इंफॉर्मेशन कहां पे दिया हुआ है? जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? जी। नेवर। ट्रू फॉल्स की जगह पे यस नो लिख दिया, यस नो की जगह पे ट्रू फॉल्स लिख दिया, सारे कट जाएंगे। फिर आप कहेंगे होया कि मेरे नाल, ये होता है। ठीक है, अब जब होते ना ज्यादा अक्लमंद बनते, मैंने ना वर्ड भी एहतियातन लिख दिया था कि ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए। एग्जामिनर उधर माइक बंद करके कहा है मैंने, ठीक है ना, तो वो आपने एग्जामिनर का ख्याल नहीं करना। एग्जैक्टली तो आंसर क्या होगा? जी। जब उन्होंने लेबल कर दिया ना ए बी सी डी, वहां पे आपने आंसर वही लिखना है। कैन वी राइट T, कैपिटल T, कैपिटल F, कैपिटल NG? यस यू कैन राइट, एब्सोल्युटली। बस ट्रू फॉल्स में यस नो और ट्रू फॉल्स का ख्याल रखना है, उसको इनसर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। While monitoring a telecommunication company, Pekidi observed a growing dash on the recommendations made by AI. वापिस जाइए, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, ये हम पढ़ चुके हैं। ग्रोइंग डैश ऑन रिकमेंडेशंस बाय मेड AI, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकमेंडेशन देती है उस पे लोग ज्यादा। टाइटल पेज, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। मिल गया? मैं इसको पढ़ रहा हूं, थर्ड लाइन पे आ जाए। वर्किंग प्रैक्टिसेस। मिल गया सबको? टाइटल पेज, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ठीक है, वर्किंग प्रैक्टिसेस। मिल गया? एक दूसरे को हेल्प कर दें। वर्किंग प्रैक्टिसेस सबको मिल गया? चलें पढ़ते हैं। वर्किंग प्रैक्टिसेस वेयर बाय वर्कर्स लर्न थ्रू द एल्गोरिथम आईज एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन इट्स इंस्ट्रक्शंस। किसकी इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंडेंट होते हैं? एल्गोरिथम्स आए, इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वापिस आए, राइट। ग्रोइंग डैश, ग्रोइंग डिपेंडेंस। डिपेंडेंस के लिए वर्ड ढूंढने क्या होगा? रिलायंस। वेल डन। तो रिलायंस का आंसर क्या हो गया? ई। अब आपने रिलायंस नहीं लिखना, आंसर में क्या लिखना है? ई। वेल डन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। मीनवाइल स्टाफ आर डेटर्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड यूजिंग देयर ओन। स्टाफ को रोक रहे हैं कि ना तो तुम लोगों ने कोई तजर्बा करना है, ना अपनी कोई चीज यूज करनी है, जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रही है वही करना है। अब जरा जाइएगा वापस, देखिएगा। स्टाफ आर डेटर्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड यूजिंग देयर ओन। सेम पैराग्राफ, ओके। टाइटल पेज, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट लाइन, अल्टरनेटिव एक्सप्लोरेशंस। मिल गया? अब जरा आप सुनिएगा। Alternative explorations where experimentation and human instinct lead to progress and new ideas are effectively discouraged. अब यहां देखें किस चीज को डिस्करेज किया जा रहा है? ह्यूमन इंस्टिंक्ट को डिस्करेज किया जा रहा है। अब ह्यूमन इंस्टिंक्ट के लिए वर्ड निकाल लें, क्या है? ह्यूमन इंस्टिंक्ट के लिए ABCDEFG में वर्ड निकाल लें। इंट्यूशन। इंट्यूशन कहते हैं आपकी, जिसको नहीं आप कहते छठी हिस, ह्यूमन इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन, कि मेरी छठी हिस कह रही है कि आज कुछ होने वाला है। राइट? सो 33 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं 34 पे। टू अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशंस विच पेकिडी ऑब्जर्व्ड, researchers are trying to make AI decision making process easier to comprehend and to increase users. अब यूजर्स की कौन सी चीज है जिसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं? यूजर का मतलब है कंज्यूमर्स। कि अब फर्ज करें आप एक ऐसी कार में बैठे हुए जो ऑटोमेटिकली चल रही है, पहले तो आपको होगा खंबे में ना लग जाए, नहर में ना गिर जाए, मैं उसको कैसे कहूँगा रुकना है अपने या चलना है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो यूजर्स के कुछ फियर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। अब इसको तलाश करते हैं। वापिस आइएगा, क्वेश्चंस आंसर्स आर इन ऑर्डर, लेकिन ये अलग है ना। तो टू अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशंस विच पेकिडी ऑब्जर्व, रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू मेक AI डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का वर्ड देखें कहां पे है? सेकेंड पेज पे आ जाएं, फर्स्ट पैराग्राफ।
ठीक है, सेकेंड पेज फर्स्ट पैराग्राफ, अब जरा इसको पढ़िएगा. It's scenarios like these that many researchers are working to avoid. Their objective is to make AI technologies more trustworthy and transparent so that organizations and individuals understand. ठीक है, trustworthy and transparent so that individuals understand how AI decisions are made. Trustworthy and transparent. अब देखिएगा ट्रस्टवर्दी की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा. अब मैं कहता हूं जी आप ट्रस्टवर्दी हैं, या मैं कहता हूं मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है. ठीक है, आप ट्रस्टवर्दी हैं, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, तो आंसर हो जाएगा एफ. हाँ, नो नो नॉट एट ऑल, कभी भी ऐसा नहीं होगा. फ्रॉम दीज ऑप्शंस ए बी सी डी ई एफ, नेवर नेवर. चलें जी आगे चलते हैं. क्वेश्चन 35 to 40. अच्छा, अब आपने क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना. सबसे पहले स्टेला बाजी जो हैं उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, आपको अंदाजा है कि वो क्या कहती हैं एंड ऑल दैट. ठीक है, अब जरा वापस आइएगा सेकेंड पैराग्राफ पे. स्टेला बाजी की स्टेटमेंट दी हुई है आगे. Believes that some of the most fundamental changes are happening as a result of algorithmication. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, इससे अगले पैराग्राफ में आ जाएं. यहां पे भी उसी की स्टेटमेंट. इन मैनी केसेस, मिल गया. ओके, अब जरा सुनिएगा. अच्छा, फिर आपने पता है क्या करना है, जो पैसेज के जो पार्ट्स अनटच्ड है ना उनको फिर टच करना है अगले क्वेश्चंस के लिए. इन मैनी केसेस दे कैन आउट परफॉर्म ह्यूमन्स. दे का मतलब है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चीजें, आउट परफॉर्म का मतलब है परफॉर्मेंस में बेहतर होना ह्यूमन. सेज पेकीडी, ऑर्गेनाइजेशंस आर अट्रैक्टेड टू यूजिंग एल्गोरिदम्स. ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, एल्गोरिदम्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रही हैं बिकॉज दे वांट टू मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन व्हाट दे कंसीडर इज परफेक्ट. कि उनको लगता है एल्गोरिदम जो है वो परफेक्ट है और उस पर वो चॉइसेस बनाना चाहती हैं, परफेक्ट इंफॉर्मेशन. अब जरा आइएगा 35 से 40 तक जाते हैं और देखते हैं कि क्या राइट आंसर है. 35, ग्रेटर लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन विल नॉट रिजल्ट इन लोअर एम्प्लॉयमेंट. लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन को अंडरलाइन कर लें और लोअर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने भी फिट होना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 36. There are several reasons why AI is appealing to businesses. This seems to be the right answer. There are several reasons. वापस आइएगा. Organizations are attracted to using algorithm because का word आता ही reasons के लिए है. They want to make choices based on what they consider is perfect. एक reason ये हो गई. As well as to reduce cost. एक रीजन ये हो गई. एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी, एक रीजन ये हो गई. तो 36 का आंसर हो गया ए. ऑलराइट, बाकी भी पढ़ लेते हैं. 37, AI's potential transform people's lives. चलें इसको भी कर लेते हैं. 38 पे आ जाएं. It is important to be aware of the range of problems that AI causes. चलें इसको भी ज़हन में रखिएगा. 39 people are going to follow a less conventional career path. Okay. And 40, authorities should take measures to ensure that there will be adequately paid work for everyone. All right. Now let's go on. इसके बाद हमीश लो. आपने एक चीज और ऑब्जर्व की है, अगले पैराग्राफ में फिर स्टेला की बात हो रही है. इसका मतलब है अगर किसी का नाम बार बार आए ना और स्टेटमेंट्स ज्यादा हों तो उस एक बंदे की 2 भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, किसी एक बंदे की स्टेटमेंट ना भी हो, ये भी हो सकता है. अब हम इसको दोबारा पढ़ रहे हैं. पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाएं सब लोग. बट दीज इनहेंसमेंट्स आर नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, अब वो क्या बता रही है हमें, इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो बता रही है. बट दीज इनहेंसमेंट्स आर नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस सेज पेकीडी. इफ रूटीन कॉग्निटिव टास्क्स आर टेकन ओवर बाय एआई, हाउ डू प्रोफेशनल डेवलप देयर फ्यूचर एक्सपर्ट्स. अब इसके साथ मैच करके मुझे क्वेश्चन बताएं इस सेंटेंस के साथ कि इसके नुकसानात भी हैं. एब्सोल्युटली.
It is important to be aware of the range of problems that AI causes. और range of problems की जगह पे क्या आ गया? Not without consequences. Consequences का मतलब है इसके problems भी हो सकते हैं. Right? So 38 answer is A. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अब हम will look for another person. हमीश. सेकेंड पेज, सेकेंड पैराग्राफ, हमीश लोज. ये आ गया जी. पैकेडी की दो हो गई स्टेटमेंट्स, अब आ जाइए हमीश लो पे. इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर हमीश लो, अब जरा सुनिएगा इसको गौर से. ये क्या कहते हैं? हमीश लो believes that the future of work will involve major transitions across the whole life course for everyone. यानी सबकी जो लाइफ है एआई की वजह से चेंज हो जाए. ये अगले 10-15 साल में होने वाला है. ठीक है, हाँ, मम्मी को शोर कर रहे हैं मांगा. The traditional trajectory of full-time education followed by full-time work followed by pension retirement is a thing of the past. कि जो होता है ना एजुकेशन, उसके बाद वर्क, उसके बाद पेंशन, रिटायरमेंट, वो कहता है ये पास्ट का हिस्सा बन जाएगी. सेज लो कहते हैं इंस्टेड. अब जरा इसको सुनिएगा गौर से. इंस्टेड ही envisages a multi-stage employment life, one where retiring happens across the life course and where multiple jobs and no job happen by choice at different stages. कि आप एक से ज्यादा जॉब्स कर रहे हैं या कोई भी जॉब नहीं कर रहे, ये होगा लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे. नाउ गो बैक. मल्टीपल जॉब्स एंड नो जॉब्स, और आपका जो कन्वेंशनल करियर होता है ना, एजुकेशन, उसके बाद जॉब, उसके बाद रिटायरमेंट, तो उससे हट जाएगा ये. 39 people are going to follow a less conventional career. Less conventional career क्या है? करियर हो गया रिटायरमेंट and this and that. So people are going to follow a less conventional career path than in the past. So 39 का आंसर क्या होगा? B. हमीश. ओके, अब हमीश को और पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं और 3 नाम हैं. राइट? सो लेट्स गो ऑन. अगले पैराग्राफ में भी हमीश ही दिया हुआ है, हमीश लो. ठीक है, इस पे आ जाएं. थर्ड पैराग्राफ, लेट्स रीड इट. ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जॉब लॉसेस, लो बिलीव्स द प्रिडिक्शंस आर फाउंडेड ऑन a fallacy. It assumes that the number of jobs is fixed. If in 30 years half of 100 jobs are being carried out by robots, that doesn't mean we are left with just 50 jobs for human. The number of jobs will increase. We would expect there to be 150 jobs. Absolutely. What is that? Greater levels of automation will not result in lower employment. Employment भी बढ़ जाएगी, उतने ही ज्यादा लोग चाहिए होंगे. रोबोट खराब भी तो होने हैं ना, उसको सही करने के लिए टेक्नीशियंस एंड ऑल दैट. सो 35 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. और 35 के आगे क्या लगेगा? बी. अच्छा, अब कितने क्वेश्चंस रह गए? 2. और कितने ऑप्शंस रह गए हैं? 1. दोनों के आगे का टाइम गुजर रहा है ना, पढ़ना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना. 6 में से 4 क्वेश्चन सही कर लिए ना, आखिरी 2 पे सी लगा लें, आंसर ठीक हो जाएगा. लेकिन हम इसे करके देखेंगे. अब आगे आ जाएं. ओके, लास्ट हमारा नाम क्या है? एवन मेगॉगे. सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएं. एवन मेगॉगे का वर्ड आपको मिलेगा, बल्कि ये आपको स्टार्ट हो रहा है 4th लास्ट पैराग्राफ से. ठीक है, और आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट पे फोकस करना है. और स्टेटमेंट जो है आमतौर पे इन्वर्टेड कॉमास में होती है, यानी जो आपने स्टेटमेंट मैच करनी है वो इन्वर्टेड कॉमास में होगी. अच्छा, एक तो ये बोल रहा है इट इज द लॉज दैट रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ कैपिटल, इसके साथ नहीं मैच होगा. हमारे क्वेश्चन जो रह गए हैं वो 37 एंड 40. ओके, हिज रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च, यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया है. ठीक है, अब आप आए सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे. ही एड्स, मिल गया सबको? ही एड्स
if there is going to be a change to jobs as a result of AI and robotics, then I'd like to see governments seizing the opportunity to improve policy to enforce good job security. We can program the law and all that. So government की जगह पे word आता है authorities. Well done. Question number 40. Authorities should take measures to ensure that there will be adequately paid वर्क फॉर एवरीबॉडी, कि गवर्नमेंट ने ये श्योर करना है कि हर एक के लिए काम है. 40 का आंसर हो गया सी. अब क्या रह गया? 37. क्वेश्चन पढ़िएगा जरा 37. AI's potential to transform people's life has parallels with major cultural shifts which occurred in previous eras. So let's move on. Last paragraph पे आ जाएं. The promises of these new technologies are astounding. They deliver humankind the capacity to live in a way that nobody could have once imagined. कि इससे पहले किसी एक ही क्वेश्चन रह गया कि वो रह गया. ठीक है. He adds, just as the industrial revolution, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पास्ट में आया था जब इंसानों की जगह मशीनरी आ गई थी, राइट? जस्ट एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट पीपल पास्ट सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर and the corporate revolution enables mass production, a third revolution has been pronounced. So, which question is left for this? AI's potential to transform people's life has parallels with major cultural shifts which occurred in previous eras. Previous eras में क्या हुआ? Industrial revolution, फिर दूसरा revolution and all that. 37 will be the answer. चलें, अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें, सुकून से ऐसे बैठ जाएं ताकि दिमाग सही हो जाए.